Do you have any doubts? Yes मैम, आई हैव डाउट मैम. Yeah, tell me what's your doubt. मैम ये इंटरनेट कैसे चलता है मैम? मतलब ये जो इंटरनेट है ये होता कहाँ पे है और ये चलता कैसे है? इंटरनेट कैसे चलता है? Okay. Internet, you either have your Wi-Fi, right? Broadband यस मैम. connection, correct? यस मैम. And then you have your mobile data, यस मैम. correct? So Wi-Fi, I mean, you can use you have a big wire, right? A black color wire called as broadband. यस मैम. So, for example, there will be a main office, okay, where Yes, they ma'am. will be supplying internet through this broadband. If you take a connection, Yes okay, ma'am. they will be supplying it Yes ma'am. through that. And mobile data is like you would have seen there might be many mobile towers, right, everywhere around you. Yes ma'am. Mobile towers. Yes ma'am. So that is like an antenna, like how in older days when TV had an antenna for signal. Yes ma'am. So same way mobile towers, they will transmit the signals. मैम ये फाइल्स जो हैं ये क्लाउड में कैसे सेव होती है मैम? मतलब ये कहाँ पे होती है? Files cloud में क्यों सेव होती है? यस मैम. Because cloud is, what is a cloud? Cloud is something which is in open, in space, right? In open air, correct? यस मैम. So every time, like if you have a lot of data, too much data, okay, you will first try to save it in your laptop. Yes ma'am. Then if your laptop is also full, then you will try to save it in a pen drive. If your pen drive space is also full, then you will try to save it in a hard disk, correct? Yes, If your ma'am. hard disk is also full, then what can you do? You can only save it in air, in space, in cloud, right? Because you don't require any device. It is in air, in cloud. मैम हाउ कैन सो मेनी फाइल्स बी सेव्ड? Okay, so that's why we save it on cloud. मैम हाउ कैन सो मेनी फाइल्स बी सेव्ड इन क्लाउड मैम? Sorry? हाउ कैन सो मेनी फाइल्स बी सेव्ड इन क्लाउड? Cloud is like imaginary, okay? An imaginary space. Imaginary space. ये इमेजिनरी स्पेस क्या होता है मैम? मतलब क्या होता है इसका मतलब? Okay, it's an imaginary space. इसका मतलब क्या होता है मैम? Yeah. इमेजिनरी स्पेस का मतलब? Okay, now Lakshmi, click on rename button. यस मैम. क्लाउड में ही सेव होता है, वो इमेजिनरी स्पेस है. यू डोंट रिक्वायर एनी डिवाइस और यू डोंट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट टू सेव इट इनसाइड दैट. मैम कहीं पे तो सेव होता होगा ना, हार्डवेयर में या फिर सैटेलाइट में, कहीं ना कहीं तो होता होगा. सैटेलाइट में ही होता होगा. नहीं, सैटेलाइट में नहीं होता है. तो कहाँ होता है मैम? ये सैटेलाइट में नहीं होता है तो कहाँ होता है? सैटेलाइट में नहीं होता है. इट विल हैपन ओनली इन द क्लाउड. क्लाउड इज नथिंग बट अ फ्री मूविंग थिंग अराउंड यू. Can you see the air around you? No, right? नो मैम. You cannot see the air around you, right? नो मैम. It is the same way. You cannot see the cloud around you. So that you cannot see where the data is getting saved, but your data is saved safely. Okay, it's just like the air around you. मैम बट डाटा तो 0-1 होता है ना? हाँ. डाटा तो 0-1 होता है ना, तो ये कहीं ना कहीं तो सेव हो रहा होता है. सैटेलाइट में नहीं, हार्डवेयर में कहीं ना कहीं तो सेव होगा ना. ये हवा में कैसे हो सकता है? If you save it, it will save. Otherwise, you have to. Okay, now Lakshmi, we are almost at the end of the session. Okay, so can you click on rename quickly? Near untitled project, you have rename. यस मैम. क्लिक मैम. मैम अगर बारिश होएगी तो डाटा टपकने नहीं लगेगा मैम? यस मैम.